So yesterday we mainly look into like totally into oops object oriented programming for Python, right? So in the Python we have seen like let's revise this quickly, and for that we mainly look into like totally okay, cool. आवाज तो आ रहा है जिसमें we have seen entirely like how the OOPS concept works. So before this also we have taken some more lectures on the object-oriented programming where we have learned about inheritance and what are the types of inheritance. So there are these four types: simple inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, and hierarchical inheritance, right? Simple inheritance means it has a directly a child can access all the information from the parents. Multi-level, it's like the same one, but on a multi-level, like basically there are three, more than two to three, classes involved, right? Apart from that, there is a multiple means there can be one class can be inherited by multiple classes, and hierarchical means there is one parent, there are multiple children parents, right? Children classes. So we have seen this in this uh, code file, or go through the notes and make sure you check out. Then we have seen abstraction. Abstraction क्या होता है? It is just a blueprint of other classes. ठीक है? Blueprint यानी एक डिजाइन होगा. ठीक है? It is just a design that like this. So this is the design. It is similar to what we want to create in the future. ठीक है? So you can create multiple classes and pass this blueprint in it, right? And you can access the framework that is there. And it can be, it is not in the present in the Python. We need to, import through ABC library. We use abstract method as a decorator to create the abstract classes, right? Like this. Here I have shown you. We use this one to create the abstract classes, okay? Abstract functions. Okay. Then next we have seen encapsulation. Encapsulation क्या होता है? It is used to restrict the access or modification of properties from the outside class. Right? It means here is the example. If you want some variable, so this is a class variable, or if you want some instance variable to protect, or even the methods to protect, like no one should edit those methods or variables, you use this encapsulation. What is this? You add double underscore in front of the variable, right? So that you no one can edit or update or modify your variables. Okay. Apart from that, I think we have seen this polymorphism, right? Polymorphism meaning poly means many and morphism means forms. Okay, morphism means form. So we have seen this if you have multiple classes, okay. Here is the example. If you have this class 1, if you have this class 2, and if you inherited the class 1 inside the class 2, and if you have the same function name, right, in the both of the classes, then the first parent class function becomes redundant and only child class function goes into play, right? Whenever you call the area, if you call the area, we only got the response from this, right? We only got the response from this. So here you can see we called the area from the child. We got only child class, not the parent class. Okay. So this is all about the object-oriented programming in Python. And considering that Python is done, like almost 90% is done, and we are going ahead with the new topic today, right? So that topic is
date time function. Okay, let's say time and date time. Okay, date time and date time. So we'll cover some more topics like time, date time, or regular expression that is also common to our data science packages, Python, NumPy. So these are some mandatory or very important topics that we need to cover in with respect to the data science or AI part. Okay, so we will soon cover this, and today mainly we are going to cover this date time, okay, or time date. Okay, so let me just create a topic name that is time and date time. Okay, time and data time. What is this? So why do we use this first of all, right? So you may have seen a lot of applications like this calendar itself. Where is it calendar? I think I have not opened. Okay, so calendar itself. So इसके अंदर you have seen there are like let's say you want to create a अरे हो जा भाई you want to create a meeting, right? So you add this time, right? So this is a start time, this is end time. Okay, you select the date, you select the year, right? You select the month, right? So all these things comes under date time function. Okay, date time function, and we are going to learn that. So it's pretty easy comparing to the other topics that we have learned, and it gives you the access of using the date times inside your functions. Okay, so let's start with one of it. Okay, सबसे पहले you have to import import time. ठीक है, so by time नाम से एक package है that you have to import, and then the next package is date time. ठीक है, date time and time, these are the two packages that you need to import. ठीक है, the next thing that you need to do is so let's explore some functions from time first. ठीक है, or like we will start this together. So first is, let's say you have to know what is the start time, right? So I've taken a variable called as start time. ठीक है, so inside this start time I'm using this time library dot, I want to know the time. ठीक है, time dot time. तो टाइम फंक्शन, ये जो पैकेज है इसके अंदर इतने सारे फंक्शन आते हैं. ठीक है, यू कैन यूज टाइम, अल्ट जोन, एसी, क्लॉक वॉट टाइम, और लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर लाइक क्लॉक सेट टाइम, clock real times, right? GM time. So there are more like main functions are this time from which you will get the what the current time is going on, and then these are important. String F time, string P time. Okay, so इन चीजों को हम explore करेंगे. So now we have used this time dot time, and what it will give me? It will give me the start time. तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल start time is, ठीक है, start time is, and I am saying start time is start time. ठीक है, तो इसको मैं बस प्रिंट कर रहा हूँ. ठीक है, if I run this you will see start time is this. So this is our start time at the moment. ठीक है, so it takes the time from 1970 I guess. ठीक है, या फिर like it has this benchmark. So if I run this again it will change. ठीक है, if I run this again it will change. So this is a start time, it has some reference to it. ठीक है, so now we can say for example why why we are trying to know this start time. ठीक है, because for example let's say you have this code running. ठीक है, ये छोड़ देते हैं. For example you have this code running. ठीक है, इस कोड के इस कोड के
एट द वेरी स्टार्ट इफ यू नो व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, एक स्टार्ट टाइम आपको पता है, ठीक है, एक स्टार्ट टाइम है फॉर एग्जांपल 0 सेकेंड, ठीक है, फॉर एग्जांपल 0 सेकेंड, देन यू हैव सम प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस यानी ये पूरा कोड ले लो, या फिर आपके डेली टास्क ले लो, हाउ डू यू कैलकुलेट योर टाइम, अगर आपका ट्रैवल पकड़ लो, ठीक है, ट्रैवल में व्हाट डू यू सी, आप घर से ट्रैवल शुरू करते हैं एट टू योर डेस्टिनेशन, ठीक है, देन यू सी व्हाट इज माय एंड टाइम, उस वो रहता है फॉर एग्जांपल 2 पीएम, ठीक है, 2 पीएम, एंड योर स्टार्ट टाइम इज 1 पीएम, ठीक है, so what you do, 2 पीएम minus 1 पीएम, that is 1 hour, ठीक है, that is 1 hour. It means in order to calculate the time you should know the start time, okay, and you should know the end time, okay, you should know the end time. So these things are important, okay. So let's try to understand, so that is why we are calculating the start time, and later we will calculate the end time, okay. So let's come back to the code again. So this is our start time. ये हमारा start time. So let me just add one code here for you to understand. Let's say for I in a range of समझ लो ये मैंने range लगा ली, ठीक है. So what will happen? This loop, ये I क्या करेगा? इस इतने लंबी लिस्ट के अंदर एक कोड करेगा, ठीक है, लाइक वहां पर मतलब जा कर आएगा. तो until then we need to know what is the end time. तो मैं क्या करूँगा, एक end time से फंक्शन बना लूंगा, उसमें भी टाइम डॉट टाइम ले लूंगा, and I will print the uh, end time is end time, ठीक है, end time is end time, okay. So what I am doing here, if I run this, I will have see, this is running right now, the arrow is here. Now this was my start time, this is my end time. तो इस टाइम पे ये प्रोसेस शुरू हुआ था, इस टाइम पे ये प्रोसेस खत्म हो गया, राइट. So if I want to know what is the total time required, so the total time required for operations is, what is it? It is end time minus start time, right? End time minus start time, right? तो ये जो टाइम है इसमें से I will just remove this one. So what I will get is, so you can see the time that we have required is 4 seconds, ठीक है, 4 seconds, and these are nanoseconds. तो इस तरीके से अभी हमें पता चल गया कि इस फॉर लूप को चलने के लिए 4 सेकंड लग रहे हैं. इफ आई इम्प्रूव लाइक तो और एक जीरो ऐड कर दूं, it might take some more seconds, maybe 6 7 seconds, right? So this is how you can calculate your process time. Okay. So whenever in my, so this is very useful function by the way. So in my current project also, which I am working on, the insurance one. So in that project also, if I want to know the API calling, so we call the API, right? APIs कॉल होते हैं, LLMs को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को कॉल देते हैं, तो LLMs models takes time. So that time we calculate. So we add this function at a start of the operation and this function at the end of the operation, and we calculate the time like this. So this thing took more than 45 seconds, right? This small function took more than 45 function. Okay. It is not a small function by the way. This is a very huge list. ठीक है, ये बहुत बड़ी लिस्ट है. अगर if I do like this list of range of this, and if you see, ये लिस्ट ही बहुत बड़ी है. आप probably हमारी मेमोरी भी सपोर्ट नहीं करेगी इसको, ठीक है. इसको कैलकुलेट करने का और एक तरीका है, ठीक है.
तो देर इज वन मोर वे ऑफ कैलकुलेट, इसका एक जीरो कम कर देता हूँ। ये रुक गया शायद। ठीक है, ग्रेट। So if I take this code, okay, if I take this code and if I use this ampersand time function, ठीक है, ampersand time function, and if I run this, okay, uh, so ये क्या कर देगा? It will give me the world time, ठीक है। तो सिस्टम, जीपीयू, यूजर, सिस्टम, ये सारे टाइम्स इसके अंदर है, ठीक है। So this is also a function that will give you the wall time, कि इस प्रोसेस को कितना टाइम लग गया, ठीक है, इस प्रोसेस को कितना टाइम लग गया, राइट। तो लेट्स राइट सम फंक्शंस हियर। तो अभी हमने जो सीखा है, इट इज द फंक्शन दैट इज टाइम डॉट टाइम, ठीक है, टाइम डॉट टाइम, इसको हमने सीखा है। लेट्स राइट सम नोट्स अबाउट इट, ठीक है। तो मैं so the very first thing that it shows it shows the time that was passed since 1970, ठीक है। It shows the time that was passed since when 1970, और इसको कैसे डिनोट किया जाता है? टाइम डॉट टाइम, ठीक है। तो दिस इज द वे दैट इट इज डिनोटेड, ठीक है। पैरन दिस इट लुक्स लाइक दिस। तो व्हाट इज इसके नीचे भी, लेट मी जस्ट क्रिएट टाइम डॉट टाइम, राइट। इस टाइम लाइब्रेरी को मैंने लिया, उसके सामने सामने टाइम डाल दिया, एंड दिस टाइम इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन तो करा है। तो दिस इज द टाइम विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम व्हेन 1970, ठीक है, 1970 से ये टाइम चल रहा है। तो इट विल इंक्रीज द वे सिंस द टाइम पासेस, ठीक है। दिस इज द वे इट इज डन, राइट। सो ये समझ में आ गया है? दिस इज ऑल अबाउट दिस टाइम एंड टाइम डॉट टाइम, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं, इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। वी गॉट दिस, हैव यू गॉट दिस? you have got this, type yes. If you have got this, type yes. If you have got this, type yes. Repeat, ठीक है, सही है। So basically what we are trying to understand here is very simple thing, that we want to know whether the time, like we want to use this time function, ठीक है। जैसे हम कोई भी फंक्शन ले लो, जैसे हमने लिस्ट सीखा था, राइट। लिस्ट, लिस्ट के अंदर अगर मैं देखूँ तो इतने सारे फंक्शन है। तो लिस्ट के अंदर से मैंने अपेंड फंक्शन यूज कर लिया, एंड आई एम अपेंडिंग व्हाट, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर एक दो तीन अपेंड कर दिया, किसके अंदर? लिस्ट टू के अंदर, लिस्ट टू के अंदर। इफ आई अपेंड दिस, आई विल गेट सम, अभी इधर, ओके एनीवेज। तो मेरा मोटा मोटी कहने का मतलब यह है कि वी आर, तो पहले लिस्टिंग, ये कोई लिस्ट ही नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग अस आउटपुट एज इशू। एनीवेज, आई जस्ट वांटेड टू गिव यू वन एग्जांपल कि ये जो फंक्शन है लिस्ट नाम से, ठीक है, लिस्ट नाम से जो हमारा फंक्शन है, दैट इज सम फंक्शन जो हम यूज करते हैं, ठीक है। लिस्ट के अंदर एक अपेंड फंक्शन है। तो सिमिलरली देयर इज वन मोर लाइब्रेरी दैट इज कॉल्ड एज टाइम, ठीक है। टाइम एक लाइब्रेरी है, वो हमें सीखनी है, समझनी है। तो दिस टाइम, इसके ये किसी ने तो बिल्ड करी थी, ठीक है, एक लाइब्रेरी है, समवन बिल्ट इट, एंड व्हाट दे हैव डन इज कि उसके अंदर they have stored all the information, ठीक है। what information they have added कि 19 1970 से, 1970 में शायद ये बनी होगी, तो 1970 से इसका स्टार्ट टाइम करता है। तो 1970 को इसका 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, उस हिसाब से ये शुरू हो गया। सो दिस इज सेकेंड, दिस इज मिनट, ठीक है, दिस इज सेकेंड, दिस इज मिनट, दिस इज आवर, एंड सो ऑन, ठीक है। सेकेंड मीन्स लाइक
अब ये 57 सेकंड पे इस तरीके से इट हैज स्टार्टेड, ठीक है। सो सो दिस इज जस्ट अ स्टार्ट टाइम, लाइक ये जब भी आप इसको रन करोगे यू कैन सी प्राइस, दिस वैल्यू इज मूविंग, ठीक है। 2 सेकेंड्स हो गए, 36 हो गया, 3 सेकेंड हो गए, 39 हो गया, और 3 सेकेंड हो गया, 42 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो दिस टाइम इज पासिंग, ठीक है, दिस इज अ क्लॉक। ये बस एक मुझे टाइम देता है, राइट। नाउ इन माई एडवांटेज व्हाट आई एम डूइंग हियर इज कि मैं इसको चला दिया, तो दिस विल गिव मी सम टाइम, राइट। मतलब बेसिकली पाइथन रन्स बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो वो रिमूव करते थे, तो पाइथन रन बाय लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चल जाएगा, ये लाइन चल जाएगा, राइट। तो इस लाइन में क्या होगा, एक टाइम देगा, तो दैट टाइम विल बी फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है, दैट टाइम विल बी फॉर एग्जांपल दिस वन, जिसमें वी विल गेट सम वैल्यू, एंड देन आई एम, देन व्हाट वी आर डूइंग, ये रेंज चलेगी, ठीक है। दिस रेंज विल टेक सम टाइम, जैसे ये रन होगा, पास होगा, पास होगा, पास होगा, तो यहाँ पर मेरा एक स्टार्ट टाइम जो मैं घर से निकला था 1 PM हो गया, ठीक है, 1 PM हो गया। देन आई स्टार्टेड अ जर्नी, तो इस जर्नी में ये मुझे कुछ ऑब्स्टेकल्स मिले, ठीक है, दीज ऑब्स्टेकल्स हैव गॉट। तो इस यहाँ तक आने तक फिर से मैंने वॉच देखी, so this is like looking at watch, ठीक है, this is like looking at watch, you have seen watch, at the start of the program you got 1 PM, तो जब तुम्हारा प्रोग्राम हो गया, ट्रैवल हो गया, and now you are looking at your watch, what you got is 2 PM, right? So 2 PM minus 1 PM, हम क्या बोल रहे हैं, my travel time is 1 hour, right? My travel time is 1 hour. So this is just a something thing like looking at your watch, ठीक है, लुकिंग एट योर वॉच। तो वेन एवर यू विल रन दिस, इसको अभी भी रन करोगे आप, आपके कंप्यूटर में भी रन करोगे, तो इट विल गिव यू सम टाइम, राइट। अगर आप आपकी वॉच देखते हो, इट इज लाइक लुकिंग एट योर वॉच। तो 1 PM को देखा, 1 बज रहे थे, फिर 1 घंटे के बाद देखा, 2 बज रहे थे, इट मीन्स 1 hour हो गया। so this is the logic behind it, ठीक है। so what I am using this logic in my advantage is कि जो भी मेरा प्रोसेस रहेगा, जो भी मेरा कोड रहेगा, उसके स्टार्ट में मैं एक बार डाल दूंगा, उसके एंड में मैं एक बार डाल दूंगा, so that I will know what is the start time, what I will know what is the end time. I will just minus end time, my end time, and that time I will get the time required, कितना टाइम हुआ था, तो it was a 45 second, ठीक है। so why this is necessary in the industry is, अब देखो इसको somewhere around आधा सेकेंड्स लग गया, तो मैंने यहाँ पे 2 जीरो कम कर दिया, इसलिए लगा है। I just add one more zero, it should take 4 seconds, somewhat 4 seconds. So why we are doing this, basically we in the industry, your application should not be slow, ठीक है। अगर आपके एप्लीकेशन को हर एक रिक्वेस्ट पे अगर एक एक मिनट लग रहा है, तो आपके पास कोई आएगा ही नहीं। तो यू शुड नो व्हाट इज द टाइम ईच ऑपरेशन इज टेकिंग, ठीक है। तो वंस यू नो, लाइक लेट्स से यू हैव 10 प्रोसेसेस इन योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो एवरी टाइम you or someone is trying to use it, we should know what process is taking what time. So process one is taking 1 second, process two is taking one second, process five is taking 5 seconds or 6 seconds. So you know my process five is taking unexpected time, right? ये उसके, it should not take more time. So what you'll do, you'll focus on that process to optimize. Okay? So you should know. So that is why this time function is important. तो इसको कैसे यूज करते हैं, देर इज अ टाइम लाइब्रेरी, हम इंपोर्ट कर दिया टाइम लाइब्रेरी, एंड अ फंक्शन नेम भी टाइम है, ठीक है। तो इसको हम क्लास कह सकते हैं, इसको फंक्शन यूज कर कह सकते हैं। तो यू नो राइट, यहाँ पर हमने क्लासेस बनाए हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दिखा देता हुआ सेक्शन, ठीक है। एनकैप्सुलेशन हम कैसे कॉल करते हैं, क्लास डॉट फंक्शन, राइट। क्लास किधर है, ये हमारा क्लास डॉट उसके अंदर का फंक्शन, राइट, या ये फंक्शन है। तो सिमिलरली देर इज दिस टाइम क्लास और टाइम लाइब्रेरी, उसके अंदर टाइम नाम से ही अलग दूसरा फंक्शन है, ठीक है। टाइम नाम से कुछ इट इट शुड इट इट मे लुक लाइक दिस, लाइक क्लास टाइम,
ठीक है, क्लास टाइम एंड इसके अंदर डेफ डेफ टाइम, ठीक है, और इसके अंदर मैंने सेल्फ डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, है ना। और यहाँ पर वो प्रोसेस रहेंगे कि स्टार्ट टाइम सिंस 1970, ठीक है, स्टार्ट टाइम सिंस 1970। So how will you call this function? How will you call this function? You will say time, ठीक है, टाइम डॉट टाइम, राइट, इस तरीके से करोगे कॉल। या फिर व्हाट यू विल डू, यू विल से टाइम इज इक्वल्स टू टाइम, ठीक है, एंड टाइम डॉट टाइम फंक्शन, ठीक है, कुछ इस तरीके से यू विल कॉल दिस। इस टाइम के अंदर ये टाइम क्लास मैंने सेव कर दिया, और टाइम डॉट टाइम कॉल, इस टाइम फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। तो समवन मे हैव क्रिएटेड दिस क्लास इन द पाइथन, और उसको स्टोर कर दिया पाइथन में, और उसको एज ए लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस क्लास और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि you can create your own classes also and make a use anywhere in the Python, ठीक है। So by the time we are talking, someone may have been creating some more classes and adding in the Python, ठीक है। अभी के लिए इस रेफरेंस को मैं यहीं पे रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ही फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डमी कोड, डमी कोड, ठीक है। ये इस लाइब्रेरी, तो दिस लाइब्रेरी समवन मे हैव यूज्ड, क्रिएटेड, एंड वी आर जस्ट यूजिंग एक ही फंक्शन इसके अंदर का। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो देयर कैन बी मोर मोर, है ना, क्लासेस लाइक डेफ, और कुछ हो गया है ना, एस टी आर पी टाइम, एंड उसके अंदर और कुछ लॉजिक उन्होंने डाल दिया लाइक दिस, और कुछ लॉजिक डाल दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये क्लास बनाया होगा, सो दैट अगर आप चेक करोगे, इफ यू चेक दिस टाइम डॉट, तो इसके अंदर इतने सारे फंक्शंस उन्होंने, जिसने जिसने किसने बनाए, दे हैव क्रिएटेड दीज मेनी फंक्शंस, ठीक है। दिस वन इज फंक्शन, दिस वन इज फंक्शन, दिस वन इज फंक्शन, these are variables, this one is function, function, okay। So very first thing is what we are doing, we are just looking at this function which gives us a start time, ठीक है, which gives us a start time, and उसी को हमने एक end time, मतलब ये बस टाइम देगा, जो भी पासिंग टाइम है वो देगा। तो दिस, उसको मैंने स्टार्ट टाइम में डाल दिया, एंड टाइम में डाल दिया, ये वेरिएबल्स है राइट, और माइनस कर लिया, आई गॉट दिस। एंड दिस इज अ शॉर्टेस्ट फंक्शन, इसको बस मैं एम्परसेंड टाइम डाल दिया, इट विल जस्ट गिव मी द वॉल टाइम, मिस ये सेल कितना टाइम में रन हुआ, है ना। तो ये मोस्टली आप इसको कोड में नहीं यूज कर सकते, इसको आप ये एक्सप्लोरेशन में, जैसे जुपिटर नोटबुक में आप यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। इट विल जस्ट बेस्ड ऑन योर, है ना, सीपीयू का आपका जो भी रहेगा, किसी का सीपीयू बहुत स्लो रहा, तो इट विल गिव बेसिकली, क्या कहते हैं, ज्यादा टाइम लगाएगा, राइट। अगर किसी का सीपीयू फास्ट है तो उसको अभी ये दिस वन इज मैक, मैक ओएस, तो इट इज प्रोबेबली फास्टर वन, ठीक है। तो अगर ये आप सिमिलर फंक्शन आपके या किसी के पास लोअर कॉन्फ़िग का होगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा, राइट। So this is all about this time function, guys. Okay. So I hope this is clear now. I hope this is clear now. So if this is clear, type yes in the comments, guys. If this is clear, type yes in the comments. Okay. Or if this still not clear, तो हम और भी देख सकते हैं, ठीक है। I can explain you with, मतलब इसमें और कोई एग्जांपल देने की है नहीं, ठीक है? और कुछ ज्यादा है नहीं, बट इफ दिस इज स्टिल क्लियर, ओके, क्लियर, कूल, ऑलरेडी क्लियर, बहुत बढ़िया। So the next thing is date time. So similarly, date time object has also been created by someone. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट किसी ने क्रिएट करा होगा, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो स्टोर। तो इस डेट टाइम में ये सारे फंक्शंस हैं। तो इफ यू सी, फर्स्ट इज डेट टाइम के अंदर एक डेट टाइम फंक्शन ही है, राइट। डेट टाइम के अंदर एक डेट टाइम फंक्शन है, जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स क्या है, या आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स है, or a keywords argument. It means you can pass n number of arguments here, right? If I use datetime dot datetime, and if I say इसके अंदर भी और भी functions है, तो if I say चलो I will take this now,
ठीक है। तो मुझे बताओ कि अभी का जो डेट हुआ है, टाइम हुआ है, वो दे दो। ठीक है। तो इट विल गिव मी टुडेज डेट। क्या डेट है आज की? 9, राइट? 9 डेट है, 5th मंथ है, 2025 है। ठीक है। तो व्हाट इज द, इसके बाद ये रहेगा आवर, मिनट, सेकेंड्स, आई गेस। कुछ इस तरीके से ये बता देगा, और दीज आर माइक्रो सेकेंड्स और समवॉट इट इज समवॉट फॉर्मल द स्ट्रक्चर इट है। ठीक है। द स्ट्रक्चर इट हैज। So let's try to see some more. ठीक है। एक डेट टाइम डॉट डेट टाइम, और उसके बाद इसके अंदर और क्या है? लेट मी जस्ट गिव मी अ डेट। ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग मुझे डेट ही दे दो बस। ठीक है। इफ आई रन दिस नीड्स आर्गुमेंट, अच्छा ठीक है, इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करनी होती है। तो इसको थोड़ी सी देर के बाद में देखते हैं। ठीक है। सो इसको, जो इसके इस पे और थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। The very first thing is date time dot date time now. ठीक है। So now means it is giving you the current time. ठीक है। The current time. If I say current time is equals to, ठीक है, this one, ठीक है, this one. इसको you can use at a current time, and you can just simply say print current time. ठीक है। Print current time. So why this is more important in order to aha, one more thing. Once this is passed like this, it gives us this in this format. ठीक है, कि 3 बज के like some seconds and these are some microseconds. ठीक है, these are some microseconds. 8 मिनट हो गए, 3 सेकंड। So now, if you again run this, it will give you some another time. Okay. But basically, this is somewhat similar to this. Looking at a clock. ठीक है। बट ये बस हमें क्या दे रहा है? कुछ नंबर दे रहा है जो समझने के लिए somewhat difficult, right? So here comes the date time function. Date time के अंदर क्या है? It also gives you a date, some hour, minute and second format. ठीक है, some hour, minute and second format. If you say similarly करंट डेट, ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ। डेट टाइम की जगह करंट डेट एक नया वेरिएबल आई हैव टेकन, आई एम सेइंग डेट टाइम डॉट डेट टाइम अगेन। ठीक है। डॉट, इफ आई एम सेइंग टुडे। ठीक है। इफ आई एम सेइंग टुडे एंड आई एम प्रिंटिंग फॉर एग्जांपल द सेम करंट डेट। ठीक है। यही फंक्शन, इफ आई प्रिंट इट, आई विल गेट आज का time and all those things. ठीक है। Basically now and today is, कि मैं ये दोनों साथ में रन करके देखता हूँ। So it is almost the same. ठीक है, मतलब exactly the same basically. So today is will give you the today's time. Now will give you the exact अभी का time. ठीक है। Basically those are exactly same. ठीक है, those are exactly same. So this is how it is. ठीक है, this is how it is. जो मैंने previously I was talking about, so I think that was somewhat this was the issue actually. अगर मुझे सिर्फ डेट चाहिए तो I would, अच्छा, this why this is not missing an argument year, इसके अंदर year हमें डालना होगा। डेट टाइम डॉट डेट, अगर मैं ईयर पास करता हूँ 2025, मंथ भी डालना होगा। ओके, सो बेसिकली इट टेक्स द आर्ग्यूमेंट, नॉट पोस्ट द डेट टाइम फंक्शन। ओके, एनीवेज, तो अभी के लिए और एक, हाउ डू वी गेट इट? तो लेट्स ट्राई टू थिंक। ठीक है, मतलब मुझे चाहिए आज की डेट। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज फेलिंग टू गिव मी, बट दिस कैन गिव मी। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ डेट चाहिए तो समटाइम्स व्हाट यू हैपेंस कि यहाँ पर क्या है, अभी मैं गूगल कैलेंडर में चलेगा। ठीक है, आई जस्ट वांट कि मुझे ओनली डेट चाहिए। ठीक है, आज की या कल की 10 में, आई एम नॉट मच कंसर्न अबाउट व्हाट
I'm not much concerned about the time. Okay. So what how I can do? I can store some value in the current time, and I can say let's say current date dot, ठीक है, current date dot date अगर मैं डाल देता हूँ, what I will get this आज का date only, ठीक है, आज का date only. I can also say current date dot, और क्या कह सकते हैं, टाइम कैसे, क्या है, हम टाइम कह सकते हैं. Can we say yes? I think we can say time. So what we will get? We'll get the time only. ठीक है. What is the time? This one. 3:12:06. ठीक है. और हम क्या कह सकते हैं? Let's say current date dot. Can we say hour? Can we say hour? So let's try to run this. So okay. Int object has no callable. ठीक है. Int object has no callable. अच्छा, call नहीं है इसके अंदर. But I think we can say. तो R चल रहा है 3 hours, right? And similarly, you can call for minute, you can call for year, you can call for month. ठीक है. जैसे current date dot, for example, year. year मैंने क्या दिया? So now this will give me the year only. ठीक है. 2025. If I want the month, current time dot, let's say month आता है, आ रहा है. So if you run this, you will get the month. What's the month going on is 5. ठीक है. इस तरीके से you can get anything like related to time. ठीक है. तो एक क्विकेस्ट डिवीजन इज डेट टाइम टाइम फंक्शन हम देख रहे हैं जिसके अंदर वी कैन गेट टू नो व्हाट इज द, ये क्लॉक है. ठीक है. दिस इज क्लॉक, दिस इज एवरी टाइम, एवरी सेकेंड इट इज क्लिकिंग. ठीक है. ये आगे 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 बढ़ रहा है. ठीक है. और 10 साल के बाद दिस नंबर विल बी समवट मोर बिगर. ठीक है. बट दिस गिव्स अस अ इनिशियल टाइम. ठीक है. मतलब जैसे टाइम रियल वर्ल्ड में पास होगा इट विल चेंज. so in that logic we are making use it for our advantage. Okay. Our advantage. And this one also doing the same, date time dot now is also doing the same, but it is additionally giving us what, ऑल दीज थिंग्स. और जब हम इसको कुछ इस तरीके से स्टोर कर देते हैं तो वी गेट इन सम फॉर्मेट. ठीक है. इसके और भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं दैट वी विल लर्न इन इन द सेम लेक्चर. आई गेस वी हैव 15 मिनट. ठीक है. तो व्हाट आई हैव डन इज इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट में एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया. आफ्टर दैट आई टुक अ डेट, इसमें डेट देख लिया, टाइम देख लिया, आवर देख लिया, मंथ देख लिया, ईयर देख लिया. राइट. सो सिमिलरली I can also do the same on this one. ठीक है. अगर मैं उसके ऑब्जेक्ट पे कर सकता हूँ तो I can also run it on itself also. If I say uh, let's say I want hour. ठीक है. मुझे hour चाहिए. So if I run this I will get hour. ठीक है. थर्ड hour चल रहा था. So if I say I want uh, अरे, I want a month. ठीक है. If I say I want a month तो शायद month के लिए it will give me the fifth month it is going. ठीक है. Similarly, if I say कि कितने seconds हो रहे हैं, what is the second, what is the second they are going, so it will say 51 seconds चल रहे हैं. ठीक है. So now I run it again, 57, 58 and so on. ठीक है. So seconds will pass. So this is how basically they're like, इनको तुम clock के हिसाब से use कर सकते हो. So this is a time and date time is also a clock which is which also gives you the date also. ठीक है. So time is also time which is a clock one clock, उसको हम देख सकते हैं in Python, and this is a date, right? So have you got this कि इसको ये this are just things that we are learning कि ये कुछ इस तरीके से होती है. Now going ahead we can make a use of these things in our code कि भाई ये कितना टाइम लग रहा है. और if you want to book a, है ना, एक एप्लीकेशन बना लिया उसके अंदर डेट टाइम इंपोर्ट कर लिया एंड देन यू आर यूजिंग द डेट एंड टाइम्स इन योर एप्लीकेशन. ठीक है.
Have you, if you got this, type clear guys. If you have not got this तो अपन और कुछ अलग तरीके से सीखने की समझने की कोशिश करेंगे. If you have got this, here type clear in the comments. If you have got this, type clear in the comments. So Mr. Mahesh Vara Reddy says कि I am the 1000th subscriber. Congratulations bro. तो अपने 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं YouTube पे और the 1000th subscriber is Mr. Mahesh रेड्डी. So thank you भाई. अपने इसको इसको रिफ्रेश कर देते हैं. वाह क्या बात है. और अरे तो मिस्टर महेश महेश्वरा यू विल बी रिमेम्बर्ड. ठीक है तो हमारे 1000 सब्सक्राइब होगा हो गए बहुत बढ़िया. कूल. थैंक यू. सो लेट्स मूव on to if you have understood this one I will post it this on the GitHub and let's continue on the next function. वो ज़्यादा interesting है guys. ठीक है that is much interesting. Let me create one more note and the function says the function name is uh, time delta. Okay. So time delta. Why this is taking so much time to open? Okay. The function name is time delta. ठीक है time delta Python. ठीक है. The function name is time delta. So let's create a headline. So these are easier ones. ठीक है ये सारे easy चीजें हैं Python की. तो हम क्या देख रहे हैं कि बस टाइम रिलेटेड कुछ चीजें देख रहे हैं. सबसे पहला हमने देखा था टाइम. So that is also a clock. Date time, that is also a clock. But date time gives you a what? It gives you date also, year also, month also. ठीक है in some format. ठीक है in some format. तो ये time delta जो है it is also a part of date time. So what you have to do is import time import date time. Import date time. ठीक है इस date time के अंदर ही ये time delta रहेगा. So let's check if it is there or not. Yeah, this one. ठीक है this one. So this is what we are going to learn. ठीक है so again let me just create a current date time. ठीक है so for example if I say current what, let's say time. ठीक है current time नाम से I'm creating a function. ठीक है if I say date time dot I can also say like this date. ठीक है date dot today. ठीक है I can also say like this. So go and explore this library. ठीक है इसको इसके सामने जब भी डॉट डालोगे तो you will get some more function. तो उन फंक्शन को चेक करके आओ कि अरे हाँ अच्छा ये क्या दे रहा है. राइट so that you will have more understanding कि अच्छा this like this is somewhat vast also. ठीक है so ये आज की इसने डेट दे दी हम. ठीक है it has given the date. right so for example हमें तो अभी इन द प्रीवियस दिस फाइल आल्सो वी हैव सीन कि करंट टाइम दे रहा है. ठीक है जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ ये एट द स्पॉट जो टाइम हो रहा है it is giving that time. It is not giving me the previous time. So for example I want a date for the same thing. ठीक है अभी for example I want a date for पिछले 10 दिन का. ठीक है I want a date for last 10 day or I want to set up a date for next 20 day. ठीक है so उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. What we can do for that. So let's try to understand. ठीक है so इसको एक हेडलाइन देते हैं finding a past date. ठीक है finding a past date. For example मैंने एक base नाम से एक variable create कर दिया and there I am saying current time जो मेरा ये है. ठीक है current time जो मेरा ये है. राइट so it is giving me some date. ठीक है and if I say what I am saying
if I say current time plus date time dot delta, ठीक है, डेट टाइम के अंदर टाइम डेल्टा है, नॉट द डेल्टा, टाइम डेल्टा, ठीक है, टाइम डेल्टा, डेल्टा का मीनिंग क्या है? डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा का मीनिंग है डिफरेंस. सो इट, व्हाट इट डज, इट like there was a key, what is the delta between this and that, we usually say this, right? So it subtract the time or add the time. So यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि what are the functions of this time delta. ये सबसे पहले ये सारे पैरामीटर्स क्या करता है, रीड करता है, it adds, it subtracts the time delta, some, these are some values and compare to time delta, so whatever it is. But our understanding here is we can pass days here. लेट्स से आई वांट टू नो पिछले 10 दिन का क्या हो रहा है, ठीक है, आई वांट टू नो पिछले 10 दिन का क्या हो रहा है. तो एवरी टाइम यू विल जस्ट ऐड एंड यहाँ पर जो भी रहेगा वो लाइक प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, राइट? तो इफ आई से फॉर एग्जांपल अभी डेज को, हम जो भी डेज में हमने स्टोर करा था उसको कॉल करते हैं, क्या है, दिस इज अ करंट टाइम, ठीक है, करंट टाइम में क्या है, करंट डेट में है 9 तारीख, राइट? टुडे इज 9 में. तो पिछले 10 दिन की तारीख अगर मुझे चाहिए तो व्हाट आई विल से करंट टाइम दिस टाइम माइनस, बिकॉज दिस माइनस साइन विल बी यूज्ड हियर, माइनस जो भी 10 दिन का डेल्टा, लाइक 10 दिन माइनस कर लो. इफ आई रन दिस आई शुड गेट अ डेट ऑफ लास्ट मंथ, राइट? आई शुड गेट अ डेट ऑफ लास्ट, ठीक है. आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? If you have got this time, type yes, guys. If you have got this, type yes in the comments. If you have got this, type yes in the comments. ठीक है. So let me check it. Yes, yes, cool. Yes and yes. So if you know, if you are saying ki yes, then the next question comes to you. ठीक है. So similarly, this is the past time, right? So for similar, in a similar way, how will you calculate the future date? How will you capture the future date, right? Write this code. Try to write this code कि आप फ्यूचर डेट कैसे निकालोगे. फ्यूचर में मुझे 20 दिन आगे जाना है. आई वॉन्ट टू गो 20 days अहेड. आई वॉन्ट टू गो 20 days अहेड. तो राइट इन द कमेंट्स कि मुझे 20 days अहेड का टाइम, 20 डेज अहेड का डेट कैसे मिलेगा, फ्यूचर डेट 20 days, ठीक है. ट्राई टू राइट इन द कमेंट्स. ट्राई टू राइट इन द कमेंट्स. So you get 1 minute to do it. You have 1 minute to do it. तो अभी हो रहा है 8:55. तो उसके लिए भी हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं उस 1 मिनट को कैलकुलेट करने के लिए भी. Calculate it. Anyone, anyone, anyone? Okay, I think 1 minute is done. Yeah, no answer on the YouTube. One subscriber says day 20 कर दो बस. So that is the right answer actually. So if I simply say
days equals to current time. So what my approach will be, करंट टाइम में मुझे 20 डेज ऐड करने हैं, राइट? करंट टाइम में मुझे 20 डेज ऐड करने हैं, सो आई एम सेइंग करंट टाइम जो आज का टाइम है, which is today's date, and equal plus date time dot delta. So delta will do what? It will just add. ठीक है, तो इसमें if I say days 20, ठीक है, days equals to 20, and if I run this, what I will get? I will get this, अगले 20 दिन की तारीख, राइट? अगले 20 दिन की तारीख. So this is how guys you can do it. ठीक है, कुछ इस तरीके से you can find the past date, you can find the future date. ठीक है, so quickly write in the comments अगर मुझे पिछले 21 दिन में क्या हुआ, I wanted to know. So find a date, find a date for last 20th day. ठीक है, find a date for last 20th day quickly in the comments. Okay, so he says, Rashik says, current date plus date time dot data days equals to plus 20. Plus 20 नहीं रहेगा, बस days equals to 20 रहेगा. ठीक है, days equals to 20, not plus 20. ठीक है, indeed like the for other format is right. D should be smaller. तो अभी मुझे लास्ट पिछला पास्ट में से 21st फर्स्ट लिखना, 20th लिख दिया. ठीक है, 20th डे का कोड चाहिए. ठीक है, तो हाउ विल आई गेट टू नो, कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे पता चलेगा which one is the 21st day, 21st. Okay, again you have 1 minute. Again you have 1 minute. Anyone? Days equals to minus 21. Suha says current date time delta days equals to minus equals to रह गया यहाँ पर, and I think Prashi has corrected. ठीक है, so let's use this same code. ठीक है, days equals to current time, और यहाँ पर I will say this has to be small. ठीक है, this has to be small. Then time delta is right. ठीक है, there should not be dot here guys. ठीक है, time delta 9 बज गया, and days equals to what? 20. So current date नहीं, current time only. ठीक है, so this is our variable. So if I print this, days equals to minus 21, days equals to minus 21, we will get this. Okay, we will get this. So this is how easy you can find the last date or previous date and the uh, present date, right? Last date and present date. So इसको और like जाके इसके साथ you just need to प्ले अराउंड. फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि ये डेज के लिए है, ठीक है, तो लेट्स डू इट फॉर टाइम. ठीक है, फॉर एग्जांपल करंट टाइम नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया, देन आई हैव टेकन दिस डेट टाइम डॉट डेट टाइम. ठीक है, डेट टाइम डॉट डेट टाइम, और उसके अंदर मैंने नाउ कर दिया. ठीक है, so what it will give me, it will give me the current date time. So if I print this current time, so what it will give me this in this format. ठीक है, previously we were just looking up at what, the date. ठीक है, so if we want to look into this format, ठीक है, और इसके अंदर if I say let's say मेरे को hours change करना है. ठीक है, so what I will say, current time. ठीक है, always u plus. ठीक है, current time, and you will say date time dot time delta. ठीक है, the same function date time dot time delta. ठीक है, now what you will do here, so in order to you want to change the hours, right? फिर I will say hours
इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल -5, ठीक है, -5 चेंज कर दो, बट यू विल ऑल्सो हैव टू ऐड मिनट्स, 5 मिनट्स का कितना चेंज कर दो, लेट्स से 45 मिनट्स चेंज कर दो, माइनस कर दो, एंड सेकेंड्स, माइनस कर दो कितने, 10 या 11 सेकेंड्स माइनस कर दो, ठीक है। So now if you run this, now if you ask for hours, okay, now if you ask for hours, if I run this, you can see the difference. इसमें से ये डेट तो सेम रहेगी, अच्छा डेट भी चेंज हो गई बिकॉज वी, अब हम पिछले पास्ट 5 ईयर्स में चले गए, ठीक है। बट यू विल से कि इधर दिस इज इंडियन टाइम, यहाँ पर 9 बज के 2 मिनट हो रहे हैं, दिस इज नॉट 9 बज के 2 मिनट, दिस इज 3.3 टू 3 बज के 32 मिनट हो रहे हैं। So this takes the GMT, ठीक है, जनरल सम टाइम, ठीक है। So Indian time is IST, Indian Standard Time, then there is UST, EST, right? So इस तरीके से there are different different time zones, ठीक है। So this takes the general time zone, ठीक है। So this is how also you can, what you can do, you can minus the time, ठीक है, you can minus the time. So this is the way that this time delta works, ठीक है। So let's again tomorrow also we will learn some more time functions, that is strip time and string, passing time. तो वो दो चीजें हम कल कवर करेंगे. So this is all for about today. So if you have any questions, if you have the slightest doubt, please drop in the comments, guys. Please drop in the comments. छोटू सा भी डाउट रहा तो drop in the comments. Clear? Cool. So if you already know, if you got everything, you gotta do this. Win. So we are starting the day with a winner, right? If you got this everything, type win in the comments, guys. If you have slightest question, we can discuss. इतना भी late नहीं हुआ है, so we can discuss. Cool. Win in the comments आ चुके हैं. So that is all about today. One more update for everyone. So we'll push all these notes on the GitHub. You can access the notes from the GitHub. Okay. One more another good news for the subscribers and the students. So this is IIT Madras notes that I have got. ठीक है, तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग के नोट्स है, अभी तक हमने जितना भी सीखा है, ठीक है। यू कैन चेक ऑन द आवर गिटहब ऑल्सो। सो ये सारे नोट्स है, यूट्यूब पे हमारे सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है। सारे नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स आर देयर, ठीक है। सो वी आई एम जस्ट ऑफरिंग दिस टू आवर कम्युनिटी। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए है तो यू कैन ओपन दिस पोस्ट, and here I have created a community. So click on this and join this community. You will get these notes absolutely free. तो ये काफी like इन अच्छे notes that I have found, कि अगर मैं इसके अंदर ये देखूँ कुछ, यहाँ पर notes भी है, solutions भी है, then फिर से question है, solutions है, question है, solutions है, right? So these are good notes as per my understanding, ठीक है। और this is again from the IIT Madras uh, college. So this is really authentic and अच्छे notes है. So I'm just going to share this on the with the with the team on the WhatsApp, right? WhatsApp community. So make sure you join it. And for others, you can also refer this. So that is all about for today. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में tomorrow morning 8 a.m. Till then, practice guys. Practice is important. ठीक है? Bye bye.